So today we are going to learn voice change, but we will not only learn. Today we'll be doing a quiz, as you have been doing this voice change for a long time. So I don't have any doubt that you are going to make correct sentences. Okay, so quiz time. You are going to answer all my questions. For your benefits, there will be options. So you will have 4 options for one question. And when you will be speaking, you have to choose the right option and answer. Believe me, all the questions will be related to active voice and passive voice. Okay, guys, are you ready? Can we go ahead? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so guys, I believe you know what is active voice and what is passive voice. I'm not going to repeat that. In the following question, sentence is given in active and passive voice. Out of the given options, select the option which expresses the same sentence in the passive voice. So guys, in your question, if you see an active sentence, then in your answer, you have to find out the appropriate passive sentence. And if you, in your option, in the question, if you have the passive sentence, then you have to opt for the active sentence from the options. अगर आपका क्वेश्चन एक्टिव है तो आपको पैसिव, सही पैसिव को खोजना है चारों ऑप्शंस में, और अगर आपके क्वेश्चंस में पैसिव सेंटेंस है तो उसका एक्टिव सेंटेंस को आपको खोजना है चार ऑप्शंस. Okay, so we are going to start. So first question will go to Rishita. So Rishita, your first question is this. His pocket has been picked. What is the appropriate passive sentence for this sentence? They have. Sir, option. Sir, Yes. can I? Yes. Sir, option D. Someone has picked his pocket. Someone has picked his pocket is your answer. Archana ji, what do you think the right answer? Any option which Archana? Yes. Yes, sir. D. Someone Okay. has picked his pocket. Okay, so if Rishita wins, then 1 marks for Rishita. And as Archana is also saying the same thing, and if Archana is right, then 0.5 for Archana. Okay, so right answer is option D. Very good, very nice, wonderful, wow, yes. Option D is the right answer. Someone has picked his pocket. Wow. Okay, now next question is for Archana. So Archana, your next question is, have the box broken? Have the box broken? Have the box broken? Can you tell me the right answer? There is no negative marks, so you can opt. Have the box broken? Have the box इसका broken. हिंदी मीनिंग है, इसका हिंदी मीनिंग होता है कि बॉक्स को खुलवाओ, बॉक्स को खुलवाओ. यस, अब बताओ अर्चना. C. C. Get someone to break the box. Okay. Yeah, Rishita? Even I'm confused. Guys, anyway, if you are writing this sentence, it would be much appreciated. Yes, it is This some. sentence you will not be getting anywhere. So Sir, have the I box. also think it is option C. Get someone to break the box.
Why? Because of my clue? No, no, no. Because the other options is not. It not. Sounds appropriate for the above sentence. That's why the above one is that active is in the form of active sentence. So I'm not finding others one in the passive. That's why I'm Okay, talking the this. right answer, Archana, is option C. Absolutely right. Very good. So +1 for Archana, plus 0.5 for Ishita. Very good. Very good, Archana. कैसे किया आपने? कुछ फॉर्मूला लगाया क्या? Yes, Archana, your voice is not audible. सर किसी के द्वारा बॉक्स को ये किया जाएगा ना, तो इसलिए खुलवाया जाएगा. तो गेट समवन टू ब्रेक द बॉक्स. क्योंकि मैंने आपको हिंदी मीनिंग बताया कि इस बॉक्स को खुलवाओ. मैंने नहीं बोला कि इस बॉक्स Yes, को sir. खोलो, खुलवाओ. सो कोई तो आके खुलवाएगा. They have the box broken. Yes, sir. Yes. Okay, now the next is for Rishita. Ujjaini, if you want to speak, you can tell me anytime. I'm waiting for your signal. But right now, Rishita is going to speak. Rishita, your sentence is this. I saw him conducting the rehearsals. I saw him conducting the rehearsals. Sir, option B, he was seen conducting the rehearsal. Archana? Yes, sir. B. He was seen conducting the rehearsal. Have you guys discussed with each other कि जो भी मैं बोलूं वही next तुमको वही बोलना है यार. कुछ तो नया ट्राई करो कि अगर वो गलती गलत बोलती तो आप भी गलत हो जाओ. तो ऑप्शन बी पे ताला लगाना चाहिए. ओके, सो लेट्स सी. यस, चेंज कर सकते हैं क्या? Can I change? yes, please. I would love to. Sir, he was seen by me to conduct the rehearsal. You were seen by me to conduct the rehearsal. अर्चना जी क्या करें? आपका भी? No, sir. Okay, guys, the right answer is option D. I saw the rehearsal being conducted by him. I saw the rehearsals being conducted by him. कैसे हुआ सर ये? I saw the rehearsal being conducted by him. So guys, first of all, एक चीज आपने दिमाग नहीं दिया. If the sentence active में है, पहली बात. दूसरी बात है कि वहां पे conducting है, मतलब ing है, और कभी भी ing फॉर्म होगा तो वहां पे being होगा, being होगा. यहाँ पे आपने जो जो सिलेक्ट किया वहां पे कहीं पे भी being नहीं है. हाउ कैन यू जस्ट स्पीक पैसिव सेंटेंस विदाउट? Sir, लेकिन तो I saw him conducting the rehearsal. I thought that the active sentence is in that past tense, simple past. That's why I saw. The thing is that there are two different sentences are here. This is not normal passive that we had been doing it. These are big complex passive जहाँ पे दो sentence, एक sentence है I saw him और दूसरा sentence है कि she was conducting the rehearsal, sorry he was conducting the rehearsal. तो यहाँ पे I saw him का passive और he was conducting the rehearsal का passive mix हो जाएगा. I saw the rehearsal being conducted by him. Okay, now let's go for the next one. So next is Archana. तो दोनों का गलती हो गया. आप दोनों का अभी 1.5 पॉइंट में आप लोग बैठे हुए हो. ओके,
So Archana, for you, do you imitate others? Do you imitate others? क्या आप दूसरों की नकल करते हो? क्या आप दूसरों की नकल करते हो? Tell me, Archana. A. Are others imitated by you? Imitated by you. Yes, sir. थोड़ा Imitated सोच by के you. बताओ, ऑलरेडी एक गलती हो गया. रिशिता, you tell me. ये सेंटेंसेस अगर हो सके तो लिखते रहिए, क्योंकि ये सेंटेंस आपको नॉर्मली हर जगह नहीं मिलेगा. Yes, Sir, guys. I think it is B. Are others being imitated by you? Are others being imitated by you? Are others being imitated by you? तो क्या लॉक कर दें? The right answer is, my finger is going to click the absolutely right, Archana. You are absolutely right. Point नहीं, पूरा 1 मिलेगा. Absolutely right. ऋषिता, ये जो being होता है ना, ये तभी आप लिखोगे जब ing फॉर्म एक्टिव सेंटेंस में होगा. being तो यहाँ आएगा ही नहीं पहली बार. Are others imitated by you? आप देखो ना, do you imitate others? इसका affirmative sentence क्या होगा? You imitate others. You imitate others. उसका passive होगा others are imitated by you. उसको फिर interrogative करोगे, are others imitated by you? You have done it. I don't know. This sentence is a normal sentence. हमने इसको बहुत बार किया है. इसको आप अगर normally थोड़ा देखोगे आपको समझ में आएगा. Archana, very good. You are in 2.5 and Rishita is standing in 1.5. But Rishita has missed one option. That's the problem. Okay, Rishita, for you, the next sentence is, he teaches us grammar. Sir, option A, grammar is taught to us by him. By him. और ऑप्शन सी भी कर सकते हो. नहीं सर, इसमें बीइंग है ना ऊपर एक्टिव में, तो बीइंग है नहीं. मैं गलती दोबारा नहीं करूंगी. अच्छा. Yes, Archana ji, tell me. Sir, D. B. We are taught D. अच्छा, we are taught grammar by him. हाँ, ये भी तो होता है. क्या करे ऋषिता? अभी तो डी देख के लग रहा है यही होना चाहिए सर. We are taught by. Archana, you said D, right? D, sir, D. Last वाला. Last वाला. Last Rishita. D. जल्दी. सर, This question was for Rishita, right? yes sir. Yeah, Rishita, tell me. Teaches us grammar. Fast. सर मुझे अभी डर लग रहा है सर. D. D. We are taught grammar by him. Okay. Taught grammar. Now I'm going to click it. Absolutely right. D is the right answer. Very good, Rishita. We are taught grammar by him. We are taught grammar by him. Absolutely right. We are taught grammar by him. So Rishita is standing in 2.5 and Archana is at 3. Very good. याद रखना, मार्क्स में कहीं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिखते रहना. Okay, Archana, you are ready? Yes, sir.
Mona was writing a letter to her father. Mona was writing a letter to her father. C. A C. letter was being. Yes, sir. A letter was A being written letter by was being her written father. by Mona to her father. Okay, Rishita. Yes, sir, it is C. A letter was being written by Mona to her father. Okay, absolutely right. It is option C. Absolutely right, अर्चना. अर्चना ने अभी तक कोई गलती किया ही नहीं. तो अर्चना पहुंच चुकी है 4 पे और ऋषिता पहुंच चुकी है 3 पे. ओके, वेरी गुड. अब ऋषिता की बारी. Ratan is performing an experiment. Ratan is performing an experiment. Sir, an experiment is being performed by Ratan. It means option A. Option A. Archana. Yes, sir. A. Okay, A. So चलो फिर देखते हैं हम लोग. Option A is the right answer. Absolutely right. Very good. So Rishita is at 4 and Archana is at 4.5. Very good. You people are अभी बहुत ज़्यादा expert हो गए भाई आप लोग passive में. Wow. Okay. Now the next question is for Archana. I didn't speak even a single word in the meeting. मैंने मीटिंग पे एक भी वर्ड नहीं बोला, एकदम साइलेंट थी. बहुत इजी है, जितना डिफिकल्ट लग D. रहा है उतना इजी है. D. Even a single word was not spoken by me in the meeting. एक बार फिर से सोच लो. ऋषिता. Yes, sir. It is option D. Even a single word was not spoken by me in the meeting. अभी अभी अर्चना को बोले फिर से सोच लेना और उसी में तुमने भी बोल दिया कि वही आंसर है. इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो आप लोग. नहीं सर, वही होगा. अर्चना, यू वांट टू चेंज? No, sir. भाई इतना ओवर कॉन्फिडेंस तो सही नहीं है. सिर्फ कॉन्फिडेंस है सर, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं. तो आंसर बताएगा और ये आंसर आपके सामने. Absolutely right. Yes. वाओ वाओ वाओ. देखने से लग रहा है ना कि कितना डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि यू नो द राइट आंसर इज द डी ऑप्शन. वेरी गुड, वेरी नाइस. कैसे पता चला अर्चना, बाय द वे? आप कैसे समझ पा रही ये हो? सर सिंपल, पास्ट सिंपल में है ना सर ओके, सो ये पास्ट सेंटेंस, इससे है ये तो इसीलिए आपने हर वहां रूल के अकॉर्डिंग. हाँ. एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि यहाँ पे कोई हैव या हैज कोई वर्ब है ही नहीं ऊपर में, तो यस उसी सर. से पता चल गया कि पहले 3 ऑप्शन तो होगा ही नहीं. तो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सो आप अर्चना पहुंच गई. कितना में पहुंची आप और अर्चना जी? 5 में शायद 6. 5 में नो पहुंच. सर, 6. 6 मैंने काउंट नहीं Five. किया उनका. 5. ओके, तुमसे 1 पॉइंट आगे. मेरा ओके, कितना था? मैं पूरा पॉइंट भूल गया. मेरा को अभी माफ करो तुम लोग. एनीवे, अगर ओके देखते हैं अभी आगे. इतना भी दिमाग में आप मार्क्स नहीं रखेंगे. ओके ऋषिता, फॉर यू द नेक्स्ट इज he was known by me by his voice. बेसिकली उसको मैं जानता हूँ उसके वॉइस से, जब मेरे से उसने बात किया अंधेरे में. सर ऑप्शन डी. बी. B. for I knew Bombay. him by knew him by his voice when he
spoke to when he spoke to me. in the Wait, dark. when he spoke to me in the dark. Yes. Option B. Okay, Archana ji. D. D. Yes, sir. D. D I for Delhi. last wala. I need. Yes, sir. Yes, sir. Knew him by his voice when he speaks to me in the dark. Mm-hmm. Rishita. Yes sir. Yeah, D. नहीं सर बी दोनों ही तो पास्ट में है तो पिछले वाला कैसे वो स्पीक्स हो जाएगा. रिशिता दिमाग लगा रही है यहाँ पे कि वहाँ पे स्पीक्स कहाँ से आएगा. क्या करें फिर रिशिता बी को ही लॉक कर दें. बी को ही कीजिए सर. अर्चना जी. Yes, sir. B ही होगा. B. दिमाग लगा रही है वो आप शायद. B, sir. B. I knew. D. D for doctor. हाँ, yes, sir. No, sir. D for doctor नहीं. B for ball. Option B is the right answer. Absolutely right. Very good. Both of you, Rishita, to be more specific. क्योंकि रिशिता ने देखा कि D तो होगा ही नहीं क्योंकि वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट में लिखा हुआ है. Somehow I knew him by his voice when he spoke to me in the dark. Absolutely right. Okay, guys. Now the next is for Archana. Where will he meet? Sorry, where will he meet you? अच्छा ये meet होगा. Sorry हाँ. एक मिनट रुको. Meet होगा मैंने गलती से met लिखा. Where will he meet you? Yes, Archana ji, tell me. C. C. Yes, sir. Okay. Rishita. Yes sir. C. Where will you be met by him? Okay, right answer is C. Absolutely right. Very good. So guys, these are the sentences, you can speak in this way also. Some, where would he be, where will you be met by him? These are the way we can ask question. We can speak in passive sentences. Very nice. You people are doing absolutely great work. Okay, now I'll again go to Rishita. Yes, Rishita. The spilled milk was licked up by the cat. सर spilled milk means जो जमीन पे भी पड़ा हुआ रहता है वो. गिर गया, spilled हो गया, गिर गया, वो कैट ने उसे लिक कर लिया, पूरा खा लिया, चाट लिया. Licked up. The spilled milk was licked up by the cat. The cat licked up the spilled milk. The cat was leaking the spilled milk. Okay, so option C is your answer. Archana ji. ये बहुत इजी है, इसमें तो कोई गलती कोई कर ही नहीं सकता. If somebody is doing mistake, it means अच्छे से वो sentence को देख नहीं रहा होगा, evaluate नहीं कर रहा होगा. Otherwise, this sentence is very, very easy. Archana ji. Sir, A. A. Yes, sir. Okay. Why not C? Actually, sir, ये पैसिव में है और इसको एक्टिव बनाना है हम लोगों को. Right, right. तो
इस वजह से ए। मेरा आंसर तो और ज्यादा होना चाहिए था. So Rishita is saying C and Archana is saying A. So there is a discrepancy between both the answers. So let's see. The right answer is A. No doubt. इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए. The cat was licking. अगर C ऑप्शन होता licking ing तो पैसिव सेंटेंस में being नहीं होता. पैसिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है और सी तो पास्ट कंटिन्यूअस है. Yes, sir. ओके, वेरी गुड अर्चना, वेरी नाइस. अर्चना जी शायद जीत गई हैं, लेकिन फिर भी अभी लास्ट ऑप्शन अर्चना जी के लिए. अर्चना जी ने आज एक भी गलती नहीं किया. नहीं, एक गलती किया शायद. किया क्या? नहीं सर. आप गलती जरूर करोगे. आई एम गिविंग यू द मोस्ट हार्डेस्ट वन. यस, I remember my sister helping me in the nick of time. I remember my sister helping me in the nick of time. Nick of time का मतलब क्या होता है? पता नहीं सर. Yeah, Archana, what is the meaning of nick of time? Nick of time. No sir, I don't know. Bit. Nick of time का मतलब I होता है don't know sir. just in time. Just in time. Just in time मतलब जब जरूरत था तब. I remember my sister helping me in the nick of time. बहुत से मतलब बोलते हैं ना, जब मेरी बहुत जरूरत थी तब उसने मुझे हेल्प किया था. It was in the nick of time that person helped me. The just in time. Okay, अब बहुत हो गया मीनिंग. अब आ जाओ पैसिव सेंटेंस. तो अर्चना जी, tell me the right answer. Yes, pass. अर्चना जी पास कर A दी. sir. I remember I was helped by my sister in the nick of time. थोड़ा सोच के बताना. Yes, Rishita, what do you think? Sir, I remember being helped by my sister in the nick of time. B. B. Okay, so there is a tug of war between A and B. किसी को शायद चेंज करना पड़े, या तो ऐसा ना हो कि किसी का आंसर किसी का ही सही ना हो. Remember myself being helped. Sir, अर्चना, sir, I want to change. C sir. I remember myself being helped by my sister in the nick of time. okay. Rishita, पता नहीं लग रहा है अभी तो. सर, B रहने दीजिए. मतलब बी में कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो रहने क्यों दे भाई. कॉन्फिडेंट होना चाहिए. माई सेल्फ वाला ही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है. माई सेल्फ होगा तो क्यों होगा वो, फिर एक एक्स्ट्रा वर्ड कहाँ से आएगा, इसीलिए उतना कॉन्फिडेंट नहीं है सी में. बी में ज्यादा है. देखते हैं. Okay, so as per Rishita it is B, and as per Archana it is C, and the right answer is B. Absolutely right. अर्चना जी, पैसिव सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ब आता है. एक्स्ट्रा ये सब
जो है माई सेल्फ, ये सब कहाँ से आता है भाई? कोई एक्स्ट्रा वर्ड को डालना ही नहीं है, जो मतलब एक्स्ट्रा कौन होगा? एक एक्स्ट्रा वर्ब होता है पैसिव में, ये हमको पता है। एक्स्ट्रा नॉर्मली माई सेल्फ को लेके क्यों आप आ रहे हो? कोई जरूरत ही नहीं था उसका। यस सर। और दूसरी बात है, आप इससे पहले आपने ए बोला था। पहली बात आप देखो यहाँ पे सिस्टर हेल्पिंग है, आईएनजी है, इसका मतलब है कि बीइंग होगा। I remember being helped by my sister in the nick of time. Guys, right answer is B. So what is the score? Final score क्या हुआ फिर? सर वो अर्चना जी मुझसे आगे है, फाइनल स्कोर के बारे में नहीं पता। तो अर्चना नहीं नहीं, एक नहीं अर्चना नहीं, ऋषिता का भी एक गलत हुआ और मेरा भी, तो ऋषिता का इक्वल दो है गलत हम हुआ दोनों। ना, ऋषिता का शायद 2 गलत हुआ। यस सर, 2 गलत हुआ। हाँ, ऋषिता का 2 गलत हुआ और आपका 1 गलत हुआ, तो उस हिसाब से यू आर द विनर। Very good, Archana ji. Well done. But yes, you both did a very good job क्योंकि sentences were very complex. ऐसे normally ये सब sentences को कभी हमने practice नहीं किया, तो उस हिसाब से you both did an awesome work here. Very good, very nice. सर अब पता लग रहा है प्रैक्टिस का बहुत जरूरत है सर। वी नीड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिसेस।